30 डिग्री इधर जा रहा है। क्यों? मैं वही बताऊंगा आपका लॉस है। You know the procedure. I will explain why we are going like this. पहले सिग्मा 1 फिक्स हो गया, देन सिग्मा 3 को 90 डिग्री फ्रॉम हियर इसी डायरेक्शन में जाना, मतलब आप इधर भी जा सकते हैं, इधर पर देन इज ओनली वन पॉइंट, दैट टोटल अमाउंट इज 180. You go a 90 degree this way or 90 degree this way, same point will come. प्लॉट करके देखो 30 डिग्री जाओ टुवर्ड्स, हां बस इसका ठीक है। One more chapter I have to cover. See, suppose this is a homogeneous rock. Understood? You are creating a fault in it. Suppose normal fault. So sigma 1 has to be like this, vertical. Understood? Suppose you are creating a normal fault. Sigma 1 should be like this. समझो थोड़ा बहुत. Now, if sigma 1 is vertical, now the fracture which is going to be created will make a 30 degree angle with sigma 1. Original theory is see, the fracture which will be created, that will be making 30 degree angle with sigma 1. So suppose this is a homogeneous rock and sigma 1 is like this, then fault plane will be created. कैसे? यहाँ से 30 डिग्री और फॉल्ट प्लेन से 30 डिग्री होगा आपका सिग्मा 1. यही बात है ना, फॉल्ट प्लेन जहाँ क्रिएट होगा वहाँ से सिग्मा 1 will be 30 डिग्री और फ्रॉम सिग्मा 1 टू फॉल्ट प्लेन 30 डिग्री. दैट इज द फंडामेंटल इफ इट इज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम. अंडरस्टूड ना? सपोज मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज कर, सपोज देयर आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स, आप वर्टिकल दे दो, the number of such fractures will be faulted. खाली 30 डिग्री वाला भी करेगा, 30 डिग्री में जो फैब्रिक है वो भी उसमें भी स्लिप होगा, 40 डिग्री में भी स्लिप होगा, 50 डिग्री में भी स्लिप होगा. बट इफ यू आर क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली 30 डिग्री विल बी क्रिएटेड. ये डिफरेंस है. सपोज यू आर क्रिएटिंग ए फॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, द प्लेन विल बी एट 30 डिग्री पोजीशन फ्रॉम सिग्मा 1. ये उसका फंडा. And what about sigma 2 and sigma 3? Sigma 2 has no influence, no value, no effect on the fault creation. So sigma 2 will be parallel to it, fault plane का ऊपर रहेगा. Whatever value it could be, magnitude, it has no influence on fault creation for the first time. Understood ना? But suppose fabrics are there, already existing fractures, उसमें सिग्मा 2 काम करेगा. रिमेंबर, if it is creating for the first time, sigma 2 has no effect. Sigma 2 will pass through the fault plane. But suppose the fabrics are there, fractures are there, ऐसा. So only 30 degree fracture will not be faulted. 40 degree faulted होगा, 50 degree faulted होगा, 20 degree faulted होगा. वहाँ सिग्मा 2 को आप along the fault नहीं ले सकते. You don't understand the difference ना? Only if it is created for the first time, these are the things we follow. Because now we are doing that. First time it is being created. If you go for subsequent things, then sigma 2 will not be parallel to fault plane. तो होगा ही नहीं. It will not lie on the fault plane. It will have different orientation. वो हम करेंगे. That is a very complicated issue. That is why you should understand this simply first. Understood up to this point ना? So sigma 1 is like this. So now fault is created. ऐसे fault create हो गया, ऐसे suppose, and you are working, your sigma 1 is like this. So now कौन सा डायरेक्शन में करेगा स्लिप? This, see, you are pressing from this side. It will work in the sigma 1 direction. You see, if it is working like this, the slip will be this. If it is little tilted, the slip will be this. If it is tilted this, suppose it is vertical, it will not tilt this way.
If it is absolutely vertical, it will tilt like this, absolute down dip. If it is like this, if it is this way, follow this point now. First is 30 degree is created. Second time the slip will take place either down dip or with making a oblique. So these are slicken sides. Slicken sides. You have to follow this point now. That means if it is down dip, it is absolutely from the top. If it is oblique, it is obliquely oriented. This point is okay now. Now suppose this is down dip. Suppose this is down. Now this down dip lineation you can plot on the fault plane. Fault plane के ऊपर आप plot कर दिया. Slicken side को plot कर दिया. ये lineation plot कर दिया. That is what you did now. Now where is sigma 1? यहाँ से आपको 30 डिग्री जाना पड़ेगा क्योंकि प्लेन इज क्रिएटिंग 30 डिग्री एंगल विद सिग्मा 1. तो सिग्मा 1 जहाँ है वहां से 30 डिग्री एंगल. So why you are going 30 degree? This is the rule. Because your flexor plane first time is being created at 30 degree position. तो ये ऐसा है करके आपको 30 डिग्री में फॉल्ट क्रिएट हुआ. तो ये जो 30 डिग्री एंगल मेजरमेंट करेंगे आप on some plane you have to measure ना. You cannot measure in any direction 30 degree. So this slicken side भी रहेगा उसी प्लेन में प्लस फॉल्ट का नॉर्मल भी रहेगा. That is the rule. फॉल्ट का पोल रहेगा प्लस लिनिएशन भी रहेगा. That is why your फॉल्ट का जो पोल प्लॉट किया प्लस इस स्लिकन साइड रहा, ये दोनों को एक ग्रेड सर्कल में लाया आपने. So this is the plane along which your measurements have to be made, you know, sigma 1, sigma 3 के लिए. So when we are tracing vertically, this plane will contain this slicken side plus pole. If it is oblique, same principle. The oblique lineation plus pole along that you have to measure. Because वहाँ sigma 1 ऐसे रहेगा, vertical नहीं ना, sigma 1 is ऐसा oblique. If it is this way, so this plane you have to plot pole plus this slicken side. Understood this? That is why you are plotting this plane also. This plane is for oblique slicken side. Oblique slicken side and pole. This is down dip slicken side and pole. So these planes are what planes? These are called movement plane. Movement plane means pole रहेगा plus slicken side मिला के बोलते हैं movement plane. That's all. Understood ना? So these planes are called movement plane. Containing pole plus slicken side. Pole slicken side. So movement plane carries slicken sides plus pole. दोनों को ले. Understood? उसके ऊपर sigma 1, sigma 3 रहेगा ना? Understood ना? हाँ. Can you explain again for the oblique? Oblique slicken side. Will be the pole and. Pole will be like the pole is always a kind of vertical. These are all poles. Any vertical on the plane is pole. तो ये pole plus this slicken side दोनों मिलके जो ग्रेड सर्कल बनेगा ना. इसमें मूवमेंट तो हुआ है, स्लिप हुआ है. तो दिस इज दैट प्लेन. तो ये स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज प्लॉट द फॉल्ट प्लेन पोल. देन प्लॉट द स्लिकन साइड जहां भी है आपका स्लिकन साइड वो प्लॉट करो करके दिस प्लेन को कनेक्ट करो. तो कहते हैं वो 30 डिग्री. व्हाई 30 डिग्री यू अंडरस्टूड ना? दैट विल बी सिग्मा 1. और नॉर्मल फॉल्ट सिग्मा 1 इज लाइक दिस ना, वर्टिकल. So you have to go 30 degree this side, vertical side. If it is a thrust, suppose thrust उल्टा होता, slicken side से आपको thrust पता लगता ना, तो sigma 1 would have been this side, sigma 3 would have been sigma 1. Thrust के लिए low angle होगा ना, vertical होगा sigma 3. So first you have to decide from the slicken side
normal fault or a reverse fault. Silicon side will tell you, side stepping rules will tell you ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर नॉर्मल फॉल्टिंग हुआ या रिवर्स फॉल्टिंग हुआ. सिलिकन साइड का लाइंस है, बट ये मूवमेंट कैसे हुआ, whether a normal hanging wall has gone down or hanging wall has gone up. Who will tell you that roughness or the side stepping, you know? So if it is a normal fault, this 30-degree value will give you sigma 1. If it is a reverse fault, this 30-degree value will give you sigma 3. Understood this part, na? So sigma 1, sigma 2 depends on what nature of the fault. So along this plane, sigma 1 and sigma 3 will lie. That's all. And sigma 2 will be on the fault plane. ये fault plane का ऊपर sigma 2 रहेगा. I told you sigma 2 will be on the fault plane. तो कहाँ है इसका pole will decide. Because sigma 2 is right angle to sigma 1 and sigma 3. So sigma 1 and sigma 3 are lying on this plane. So इसका pole either it may lie here, it may lie here, it may lie here. So sigma 2 will be decided. Sorry. Yeah? So for example, my fault is reverse fault. हाँ. Then that 30-degree will Sigma 3. in opposite direction. No, the Saturday will go that way only. Towards center, towards vertical. Vertical will be sigma 3, na? So sigma 1 will be this side. What you are telling? That's what you are telling. Opposites. समझा कि नहीं समझा? So that means the sigma 1 and sigma 3 will be itself on the movement plane. Movement plane. Movement plane, how you are going to decide? Silicon side and the pole. Silicon side tells the movement plane. Along that movement is taking place, na the But movement is a line actually. It's like slip direction. Slip direction. On this fault plane is the movement plane in fact, but slip direction is giving that one. ऐसा है कि ऐसा है, समझा कि नहीं समझा थोड़ा वो? Follow this point now. The point is one thing to understand. So this procedure could understand. Once you know sigma 1, sigma 2, sigma 3, all these things you can tell. But amount, I will tell you how amount is decided. 15 MPa, 20 MPa, 10 MPa. They are not determined like that. We go for a ratio. The ratio, how the ratio is derived, I will explain. But first we try to understand this. One more point I will tell you. Now tell me, why silicon sides are created this way or this way? Suppose slip is taking place like this. So silicon side will be created like this. If slip is taking place like this, silicon sides will be like this. So this direction indicates what? Understand your point? Now you see, when you are initially the block was continuous, you are giving sigma 1. So this plane was acted upon by a normal stress and a shear stress. जब टूटा नहीं था, when this was not broken, it was not broken. You applied a sigma 1, sigma 3 this way, sigma 2 like this, So this plane had some amount of normal stress, some amount of shear stress. Okay, this stress will be resolved now. So on this plane, you are acting a normal stress and a shear stress. Along the plane is shear stress, perpendicular to plane is normal stress. ठीक है ना? Shear stress is working like this, like this, like this. Normal stress is working like this. Normal stress is parallel to your pole. Pole. Shear stress is along the plane. So there is a plane like this, and this will be the normal stress, and this will be the shear stress. Like this will work now. Follow this point. Now, what I am asking, the slip is taking place this way or this way, So along this direction some shear stress will be there, this direction shear stress will be there, this direction shear stress will be there. Along the plane shear stress is working. But the silicon side takes what? In terms of shear stress value. Maximum shear stress, तभी जाके वहाँ स्लिप मारेगा ना.
Slick sides indicates direction of maximum shear stress. ये आपको फंडा होना चाहिए. ये जो slick sides हो रहा है, that indicates slick sides indicate tau max, maximum shear stress that is. नहीं तो कैसे आएगा? Every direction there is shear stress, but the slip will take place along the maximum shear stress ना. ऐसे करता है तो maximum shear stress this way, ऐसे करता है maximum shear stress, ऐसे करता है maximum shear stress that way. That is why slip is taking place. Ligand sides are being created. Suppose this ligand side, this is the maximum shear stress. Now suppose I say the maximum shear stress direction is the slick side direction, na? Maximum slick side, maximum shear stress direction, and the normal, they are lying on this, na? You see, the slick side your maximum shear stress, and normal what? Normal stress. This plane is acted upon my normal stress and the shear stress. वो दो जो एक्सिस है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस ऐसे करता है, शियर स्ट्रेस ऐसे करता है, वो दोनों इसके ऊपर लाई करते हैं ना, ये ऊपर हो या ऊपर हो. So this movement plane defines the plane on which maximum shear stress lie and normal stress lie, isn't it? Yes. So, see these lines, you know, these lines indicate the direction of maximum shear stress. Now what is the normal stress? Normal stress is the pole direction. Pole is the normal stress. So normal stress, and this is the maximum shear stress. This plane, this is the maximum shear stress because ligand sides are created, and pole is here. Pole means normal stress. Normal stress direction जो भी होगा pole का direction वही है ना. So that means the movement plane also defines the maximum shear stress and normal stress plane. होगा कि नहीं होगा बताओ. This not only defines your ligand side and the pole, same time also defines maximum shear stress and normal stress. है कि नहीं? हाँ? How should I repeat? Indicates में. So movement plane defines plane containing tau max and sigma m. ये दोनों का रहेगा ना. Ligand side is nothing but the maximum shear stress and pole is nothing but the normal stress. ये दोनों का प्लेन वही है ना, मूवमेंट प्लेन. आपका ligand साइड ऐसा है, तो दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज लाइक दिस. समझा कि नहीं समझा? और ये शियर स्ट्रेस पोल ऐसे होता तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पोल. हाँ, ये प्लेन के ऊपर क्या क्या रहता है मैं वही बताऊँ. और ये प्लेन में क्या रहता है? सिग्मा 1 भी रहता है. ये प्लेन के ऊपर आप सिग्मा 1 निकालते हैं ना, 30 डिग्री यहाँ जाते हैं, सिग्मा 1 भी निकालते हैं ना, सिग्मा 3 भी रहता है. सो इसी प्लेन के ऊपर आपका सिग्मा 1 भी रहता है, सिग्मा 3 भी रहता है. इसका इंपोर्टेंस देखा, यही प्लेन में आप 30 डिग्री जाके सिग्मा 1 निकाला ना, इस तरफ 90 डिग्री जाके सिग्मा 3 निकाला ना, उसी प्लेन में. So that plane contains sigma 1 as well as sigma 3. So this sigma 1 sigma 3 भी रहता है, T max normal stress रहता है, ligand side भी रहता है. That plane is so important. So एक is fault plane. Fault plane से आपका इसका pole निकल गया. Fault plane will give you this ligand side orientation. Then you are joining this ligand sides with the pole. Finally, the movement plane will hold all this axis. Understand? Like fault का इतना चीज इस ग्राफ देता है. हाँ?
Why we are considering normal stress in the fight? No, suppose this is a fault. This is a plane after all, na? And you have sigma 1, sigma 2, suppose these two, sigma 1 and sigma 3 हुआ, sigma 2 तो पैरेलल चला गया, तो इसका ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। ऐसा आप देखो, suppose this is a plane, इसके ऊपर आपका sigma 1 भी काम करता है, इसको you resolve it, 1 होगा नॉर्मल स्ट्रेस, another होगा shear स्ट्रेस, रिजल्ट होगा ना। सिमिलरली सिग्मा 3 सपोज काम करता है यहाँ से, इट विल हैव नॉर्मल स्ट्रेस, इट विल हैव शियर स्ट्रेस, काम करता है। सो दिस प्लेन विल बी हैविंग नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज शियर, व्हिच वे इट इज मैक्सिमम, दैट वे द शियरिंग विल टेक प्लेस। रिमेंबर आवर ओल्ड डिस्कशन, समझा ही नहीं अभी? हाँ, थोड़ा बहुत समझा ना? मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट वेरी डिफिकल्ट, बट गोइंग स्टेप इज नो डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है? ए सपोज आई आस्क यू वन मोर पॉइंट, देन विल गो अप। But this is the slick end side, na? This is slick end side. This is the maximum shear stress. So which is the zero shear stress direction? Zero, इस डायरेक्शन में shear stress zero होगा, right angle to it ना, ऐसा ना? This will be zero shear stress. जहाँ slick end side है आपका, ये slick end side हो या ये slick end side हो, यहाँ से आप 90 डिग्री चला जाओगे on the fault plane, you will get zero shear stress. Tau will be zero. So zero shear stress will lie on the fault plane, 90 degree from the slick end side. I'll write down this. Yeah. So zero shear stress, tau zero will lie on the fault plane, 90 degree from slick end side. 90 डिग्री फ्रॉम slick end side. ये बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा? आप देखो ये फॉल्ट प्लेन है ना, तो यहाँ स्लिप मारता है, तो दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अभी तक स्लिप करेगा ना इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा ना। Slip also will be ओब्लिक ऐसे होने से ऐसा होगा, जीरो शियर स्ट्रेस, 90 डिग्री फ्रॉम द slick end side ऑन द फॉल्ट। समझा ना? तो जीरो शियर स्ट्रेस का इंपोर्टेंस तो अभी आएगा जब हम वो प्री एग्जिस्टिंग फैब्रिक देखेंगे। अभी ये तो बहुत सिंपल निकल गया आपको, assuming that the fault is created during that point of time, स्ट्रेस हो रहा है प्लस fault is created, slick end side से उसी वक्त बना, so analysis is very easy. But when you expect to know something was existing earlier, suppose a fracture plane was existing like this, it could be like this, it could be like this, any orientation it could be, na? And now you are applying a sigma 1. So all those fault planes will be active, you know, and accordingly slick end sides will be produced. वो slick end sides में क्या क्या होगा? तो follow this point ना, उसको जब पढ़ेंगे तो अभी आपको बताऊंगा how to find out the stress magnitude. अभी स्ट्रेस मैग्नीट्यूड आई हैव नॉट टोल्ड यू। स्ट्रेस मैग्नीट्यूड आएगा जब सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों इन्वॉल्व होंगे। यहाँ क्या सिग्मा 2 तो इन्वॉल्व नहीं होता ना, सिग्मा 2 इज वर्किंग पैरेलल टू द फॉल्ट प्लेन, सो इट इज नॉट इन्वॉल्व। सो वो मैग्नीट्यूड हम लोग बता नहीं पा रहे। वंस ऑल थ्री एक्सिस आर इन्वॉल्व, द मैग्नीट्यूड विल कम इनटू पिक्चर। वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज ठीक है ना, अप टू दिस पॉइंट इज ओके ना? थोड़ा इसको देख लेना, ये मंडे विल बी लिटिल टफर, यू नो, but it's okay.